Hello everyone and welcome. Today's session is based on Introduction to IT for AS and A-level campus students. So in today's session, we are going to discuss how many papers you are going to appear, what are the weightages, and what are the marking criteria or marking scheme or topics for the particular course. As I'm Kashifari, your course instructor, and my focus is on helping students deeply understand both the theoretical and the practical sides of this course. And most important part, to prepare well for the examination. So let's begin with our class today. So let's begin with the introduction of the papers. There are 4 papers where you have to appear. Paper 1 is theory. So paper 1, P1. It's a theory paper with marks of 70 marks. Duration will be 1 hour and 45 minutes. Paper 2 is a practical paper where the examiner is going to check practical skills of the students. And the marks for the paper 2 is 90 marks. Now, maybe you get confused, Kesar, why the 90 marks for paper 2? Because it's a theoretical paper and you have, practical paper, and you have to attempt some question on a computer system. Okay, the duration for that paper is 2 hours, 30 minutes. Paper 3, consider as advanced theory. And the marks are 70. Duration is also same, 1 hour, 45 minutes. Paper 4 is considered as advanced practical. Same, 90 marks. And duration is 2 hours and 30 minutes. So this is a small introduction about the paper distribution, especially for IT. Okay, paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4. Okay. So whenever the student wanted to give the paper in accelerated form, like 4 papers together, they can also give. There is no restriction so far. So the student can divide their curriculum 1 year and 2 years, like paper 1, paper 2 in the first part, and A2, then paper 3 and paper 4. It's depend on your preparation and how you studied, how much your concepts are clear. Is very much important like this. So now topic distribution as per papers. So paper 1, theoretical part. This particular paper is going to cover the maximum theoretical topics like data, information and knowledge, hardware and software, networks, backup recoveries, e-safety, IT in society, digital divides. So these type of the topics are covered in paper 1. I will just write the examples like few topics over here. Like I can say data, then hardware, software, networks, digital divide, the internet, and triple W. So these are the examples of topics which we are supposed to be covered in paper 1. And in further classes, we are going to discuss individual topic, individual chapter in detail. So if I give you a brief introduction about one of the topic, like for example, why the data is important nowadays.
because we all have our digital footprints. The mobile phones, iPads, laptops, social media, these are considered as a digital citizenship. So whenever we talk about the computer technology, whenever we talk about the digital information, so whenever you are creating a digital information, then you have to protect your information. So security. Nowadays, when you wanted to pay some money or you wanted to purchase something online or on the card only, so you can pay with by using some digital payment method by using your cell phones, NFDs, digital cards like credit card, debit cards. You can link with your mobile phones and just scan your barcode or QR code. Then you can pay directly the amounts. Emerging technologies, the robotics, AI, artificial intelligence, the role of IT in the society, digital divide, how you can manage or balance the young generation knowledge and the old one, take it the older one, the people who are not aware, not familiar with the computer technology, how they are going to work with. So awareness campaigns. So this type of theoretical topics is going to be covered in our paper one, like digital computer system or digital systems like automated system. Whenever you are going to the malls, now everything become automatic, starting from the gate, buying anything in the store. Okay, so this is a very basic part of your paper one. So whenever we talk about the paper two as we consider as is a practical part. Okay, paper two is practical. In this part, the important area which needs to be covered over here. So the topics which are coming over here, it's like documentation. They are going to check the skills of the students, how the student, how a student can create a document, like formatting the document, changing the colors, adding the pages, set up the pages like a header, footer, page numbers, this type of things. Then they're also working with the spreadsheet, how the spreadsheet works about the calculation and different formulas. Like if there's some cells are given, some you have to identify the average, you have to use the if condition, and then third one is the presentation, how a student is going to present their digital information. PowerPoint presentation they can create, how to add the slides, how to change the design, size, and they also consider as like a header, footer, page number, how to add the audio, how to add the images, how to add video recording. So this type of the things going to be covered as a practical part of paper 2. If we consider about the paper 3, so paper 3 is considered, as I already mentioned, it is a advanced theory. Okay, whenever we talk about the advanced theory, so more topics, whatever you discuss in paper 1, it is not the same one. It is maybe enhancing the topic like emerging technology, IT development, system life cycles. Whenever we talk about like paper 3 is about like advanced theory. So in advanced theory, the student should aware of system life cycle. Whenever we talk about the system life cycle, so a cycle which needs to be complete, like analyze, design, take a analyze, design, implement, testing, documentation, take a evaluation. So whenever we talk about the program life cycles and the system life cycle, so there are two more things is going to be added over here: the documentation and evaluation. So first thing, analyze the situation. What is objective is about? Identify the solution. Design, in which pattern you are going to write your solution, like flowchart, pseudocode, structure diagram. Then implementation that particular code. Once the code has been implemented, then test the code. Okay, is the test code is working perfectly fine or not? Okay, then prepare a document. Okay, whatever you write a code, whatever is your objective, analysis, solution, design, make a proper document. So if you are not there, then someone come read the manual and help the solution or help to fix the bugs in a computer system. Okay. And the very major and the important topic is project management. How to manage the project.
very important part in advanced theory. Security and privacy is also there. Social impact, ethicals, privacy, corporate laws, which type of the laws you are going to focus, and you are not going to be worried about it. So whenever you are talking about the laws is going to help you out like acts. So you are gonna study that acts in paper 3 as an advanced uh, theory. So copyright issue, data protection acts. So this type of the things you are going to cover in paper 3. So now we are talking about the paper 4. So paper 4 is also the advanced practical. So whenever we talk about the advanced practical, so it means that not the same software we are going to use it. If there's some software, then we have to use for the complex solutions, complex problem, we have to identify the solution for the complex problems. Like the first topic over here is a database. What is mean by the database? A collection of structured information. What is mean by the data? Fact and figures. Before it's processed any information. So whenever we talk about the database, so the system is going to store your information in appropriate way, like in a sequence, in a primary key, or maybe with your GR number. For example, we are looking for some students who scored highest marks in computers. So we can easily fetch the information from the database. Second, advanced spreadsheet. As I mentioned, complex problems. Okay? Whenever we talk about the complex problems, then we have to work with these things. Then we have to go for web automations. Web automation is playing a very important role as well. So whenever we talk about the integration, whenever we talk about database, whenever we talk about like these things, so whenever web authentication, web authorizing, okay, we can take out authoring. It's like about HTML, CSS, Java, this type of things you're gonna learn it. Okay. So whenever you talk about the important part of IT, so it's all about the practical task, real objective, real life examples. And the weightage for individual papers are 25%. If you are giving separate like AS and then A2, then it's mean that okay, you are looking for particular uh, weightage like 50% for paper 1, 50% for paper 2. If you are giving separate papers, if you're giving combined papers, or when you're talking about after the A2, then the weightage of the individual paper is 25%. So I hope you will you enjoyed today's class. Basically, today's class is about basic information for the course. What are the importance of the course and what are the papers? Which paper is having which type of the topics? In today's class, I just necessarily informed you or just shared the topics. But from the next classes, we will going to in detail. And as I mentioned, my main aim is to prepare students for the final examination, well preparation. System life cycle, a small introduction. I can give you the example over here. Like system life cycle based on particular stages. ठीक है, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस हैं, जैसे कि आपके पास एनालिसिस है कि आप एनालिसिस क्या होते हैं सिस्टम के अंदर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को जितना अच्छा एनालाइज करोगे उतना अच्छा आपका सॉल्यूशन बनेगा। एनालाइज के बाद आपके पास होता है डिज़ाइन, ठीक है, कि आपके डिज़ाइन क्या है। फिर डिज़ाइन करने के बाद आपकी कोडिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन आपके पास आती है कि आप इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करोगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस कोड की टेस्टिंग आ जाती है। मैं आपको खास तौर बताऊँ कि जो टेस्टिंग होती है ना, क्यूए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, कोई सिस्टम डेवलप होता है, तो उसकी सिस्टम जो क्यूए जो होते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस वाले, वो चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा नहीं चल रहा। तो हमें उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको डिसाइड करें। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आज के बोर्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा चलता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पेपर 3 के अंदर एडवांस थ्योरी में। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन मोर डिटेल, जो पेपर 1 के अंदर भी है और पेपर 3 के अंदर भी है। आईटी डेवलपमेंट एंड देयर सोशल इम्पैक्ट, जिसका कुछ पार्ट जो है आपका पेपर 1 के अंदर भी आता है और कुछ पार्ट पेपर 3 में भी आता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी एडवांस हो जाती है। फिर आपके पास जो है लीगल फ्रेमवर्क आ जाता है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, कॉपीराइट एक्ट आ जाता है।
ये सारी चीजें आपके पास आती है। फिर उसके बाद आता है हमारा पेपर 4, प्रैक्टिकल। अब जब हम यहाँ पेपर 4 की बात करते हैं तो पेपर 4 के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आ जाते हैं एडवांस लेवल के ऊपर। जैसे स्प्रेडशीट आपके पास आएगी, तो स्प्रेडशीट के अंदर सिर्फ छोटे मोटे फार्मूले नहीं है, आपके पास इफ एरर आ जाएगा, एच लुकअप आ जाएगा, वी लुकअप आपके पास आ जाएगा। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये जस्ट आपके छोटे छोटे आपके फार्मूलाज हैं। जो फार्मूलाज आपको एक बार पढ़ने हैं, उसके बाद जो है ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको हैंड के अंदर आ जाके चुटकी बजा के बोलते हैं ना, चीज क्लियर हो जाएगी। डेटाबेस आपके पास आएगा जो प्रैक्टिकल है एमएस एक्सेस के ऊपर, कि डेटाबेस कैसे काम करता है कैसे नहीं होता। अगर मैं छोटी सी यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दूँ डेटाबेस का, तो डेटाबेस हमारे पास कहलाया जाता है स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। कि आपके पास एक स्ट्रक्चर कलेक्शन है डेटा की, मीन्स कि आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, मतलब कि स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास और उसका बेच। लाइक कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, नेम लिखा, नेम के बाद उसकी क्लास लिखी और ग्रेड लिखा, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट लिखा कि वो कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है। अब 1 2 3, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बात की, अली हमारे पास है, ग्रेड 11 का, सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद काशिफ हमारे पास है, ठीक है, इसका ग्रेड 11 है और कोर्स है CS। उसके बाद अहमद हमारे पास है, ठीक है, इसका भी ग्रेड 11 है और इसका कोर्स है IT। अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबल के अंदर एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। कि अगर हमें ये देखना है कि इंग्लिश में कौन कौन है, तो अली हमारे पास है, ठीक है, CS का कौन है, काशिफ है, और IT का कौन है। अब हमारे पास ये जो फील्ड्स बन रही है, ठीक है, ये फील्ड्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है। ये वाला साइड जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल के अंदर, वो होता है रिकॉर्ड्स। कि एक रिकॉर्ड्स में कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। कि पहली फील्ड कौन सी है, सीरियल नंबर की, दूसरी फील्ड हमारे पास नेम की है, तीसरी हमारे पास ग्रेड की है, और चौथी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट की। तो ये एक हमारे डेटाबेस के अंदर आ जाता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिमांडिंग भी है, जिसको कहते हैं हम वेब ऑथरिंग, ठीक है, ऑथराइजिंग, ठीक है, कि हम वेबसाइट बनाते हैं, उसको ऑथराइज करते हैं कि हमें HTML और CSS कैसे इस्तेमाल करें। मैं HTML की अगर बात करूं बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो HTML हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो किसी भी एक वेब पेज को दिखाने के लिए एक उसकी बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है। स्ट्रक्चर में आपका पूरा पूरा कोड आता है, और प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी उसकी डिस्प्ले होता है कि वो डिस्प्ले कैसे होगा। CSS आपकी एनिमेशंस बनाता है, इनहांस करता है आपके HTML को, आपको बताता है कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी कैसे होंगी। आपने देखा होगा कि आज के ज़माने के अंदर जो है वो हमारे पास वेबसाइट्स हम खोलें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हमारे पास आती है, हर किसी का लेआउट अलग है। तो ये आपकी जो है वो CSS इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो कि आपने करना होता है पेपर 4 के अंदर। जैसे कि देखो मैंने अब सबकी आई और पेपर 3 और पेपर 4 की छोटी छोटी मैंने टॉपिक्स की आपको एक्सप्लेनेशन भी दी कि हमें काम किस तरीके से करना होता है और ये सारी चीजें कैसे लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड के पार्ट के ऊपर, कि अगर हम छोटी सी इंट्रोडक्शन अगर हम करें कि टॉपिक हमें क्या है, हम किस तरीके से बात करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के टॉपिक से, जिसके अंदर हमारे पास है डेटा, ठीक है। पेपर 1, हम टॉपिक यहाँ पे ले लेते हैं डेटा का। व्हाट इज डेटा? नॉर्मली हमारे जहन के अंदर हम बात करते हैं डेटा, तो कंप्यूटर्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई आपका डेटा क्या है। तो कंप्यूटर में डेटा हम बोलते हैं फाइल, इमेज, ठीक है। हम बोलते हैं हमारी वर्ड की फाइल, हमारी पावर पॉइंट की फाइल्स। तो ये अब देखो हम डेटा भी बोल रहे हैं और फाइल्स भी बोल रहे हैं, बहुत मेजर कंफ्यूजन है, ठीक है। So whenever we talk about the fundamentals, ठीक है, about the data, information and knowledge. So well, begin with the one of the most fundamental topics in paper 1, the difference between the data, information, knowledge, ठीक है, and it come up often in the exam as well, and it's also connect to the many other parts of the syllabus, कि आप किस तरीके से वहां पे करते हो, ट्रांसमिशन की बात करते हो, नेटवर्क की बात करेंगे, हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो हर जगह पे हमारे पास ये आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, डेटा। डेटा ऑलवेज refers to raw fact and figures, ठीक है। इन अदर वर्ड अनप्रोसेस्ड, ठीक है, एंड विदाउट द कॉन्टेक्स्ट वी कैन से। फॉर एग्जाम्पल, if I just randomly write something on my screen and I ask you what is that,
then you will not have any information about it. What is it exactly? Okay, you don't know what those numbers mean yet. Like for example, 58, 27, 55 doesn't make any sense. So what is exactly they are? So whenever we talk about the data, so data is a fact and figures, just a numbers. Okay, whenever we talk about the information, so the information is mean that is the process of the data. Like when we talk about the information, so information is considered as information is the data that has been processed and given a meaning. Okay, once the data is meaningful, like for example, if I'm writing a student scored 85 marks in IT, so that is known as information. Okay, so it's mean that the data has turned into information. So information is the data that has been proceed, okay, and processed and given meaningful information. So as I mentioned over here, okay, so that is the data. In other words, we said information is data that has been processed. Okay. Now the third part is very much important is knowledge. Knowledge is all about what you have, what you will do with that information. So whenever we are explaining the knowledge is when we use the information to make a decision. Okay. Like for example, if 85 if 85 marks scored by a student, he or she will be awarded scholarship. ठीक है, so that's it, like it's complete information कि आप अपनी डेटा या इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर क्या कर रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो. ठीक है, so that is a very basic part about the system, like the data, how the data process and what the data is. ठीक है, so this is a very important part. Now the next part, if we talk about like a security, if we take another topic in the paper 1, security. Security means to protect your information, files and storage. ठीक है, files from unauthorized यूजर. कि आपने अपने सिस्टम को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपकी फाइल्स को, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अनऑथराइज यूजर से. अब सिक्योरिटी में बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लाइक कि आप एक्सेस लेवल की बात कर सकते हो. ठीक है, कि हम एक्सेस लेवल को डिफाइन करें, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये बताएं कि किसको क्या इंफॉर्मेशन यूज करनी है. लाइक एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का काम सिर्फ डेटा देखना है. एक टीचर का काम है कि स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करना. एक प्रिंसिपल का काम है कि ओवरऑल इंफॉर्मेशन को एडिट या मॉडिफाई करना. तो ये एक्सेस लेवल हमारे पास आता है. सिक्योर करना है फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स. सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास हैं जैसे फिशिंग, फार्मिंग, ठीक है, डेटा इंटरसेप्शन, सोशल इंजीनियरिंग. ठीक है, आपके पास रूट किट अटैक है, आपके पास डीडीओएस हमारे पास आ जाता है. तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे उसके साथ. सेकेंडली, आप अब बात करते हो फिजिकल कंट्रोल से. क्या हम जो है फिजिकल कंट्रोल किस तरीके से रख सकते हैं कि हम उस एरिया का एक्सेस किसको दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ यूज ऑफ द हार्डवेयर लाइक फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर. हमारे पास ये वाला पार्ट भी हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ फायरवॉल. फायरवॉल इज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड. कि ये एक फायरवॉल बीच में बिटवीन बैठती है यूजर के और एक इंटरनेट के, ताकि कोई भी चीज अंदर बाहर हो रही है तो ये उसको क्या करे, अच्छे से प्रोटेक्ट करे.
जब आप उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो, अच्छी सी चीजों को लेकर चलते हो, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से सिक्योर रहती है। तो ये एक हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि हम उसमें बात करते हैं। या हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत हॉट टॉपिक आता है, मालवेयर। हमें ये लगता है कि मालवेयर एक छोटा सा पार्ट है, बट मालवेयर की अगर हम बात करें तो मालवेयर इज हैविंग अ 6 टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स? लाइक वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, एडवेयर, ransomware. Ransomware is one of the biggest malware in the world. हम यहाँ पर उसको जब वो कंप्यूटर में एंटर करता है, तो वो सारी फाइलों को क्या कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है। अगर आप उसको डिक्रिप्ट करने की बात करो, तो वो फिर आपसे क्या करता है कि आपसे पैसे मांगता है, रेंसम मांगता है। देन इट्स नॉट गुड कि आप, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि पैसे देने के बाद आपका अकाउंट जो है वो वापसी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक पार्ट है। आप सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती है। गॉट इट? सो दैट इज फॉर टुडेज क्लास, बिकॉज एज आई मेंशन टुडेज क्लास इज अबाउट द इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज IT for AS or A levels. What are the topics is going to be covered in paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4. What are the weightage and the marks and the duration, and the small topics about individual papers. ठीक है। अभी आपके ऊपर कुछ बच्चे एक्सीलेटर भी देते हैं, एक्सीलेशन में भी देते हैं कि भाई कि आपके पास जो है वो आप चारों पेपर एक साथ दे दो, या आप AS A2 दे दो। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप दोनों पेपर अलग अलग दो, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके और उसको आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।